अब वो नंबर्ड माने जाएं, गिने चुने दिन बाकी हैं, और ये भारत की विदेश नीति की तारीफ करना उन्हें क्यों याद आया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो दिन गिने जा चुके हैं, इसके हवाले से तो मैं अदिति जी कुछ नहीं कह सकता। उसकी वजह ये है कि अभी बहुत सारा काम होना बाकी है। इसमें कोई शक नहीं कि उनकी अपनी सियासी जमात में तोड़-फोड़ हो चुकी है और उनके कुछ अरकान जो हैं वो मुनारिफ हैं। लेकिन टेक्निकली जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो कुछ लिखा गया है, उसके तहत शायद स्पीकर जो है उनके वोट्स काउंट ना करें। तो अगर अपोजिशन ने तख्ता उलटना है इमरान खान का, तो उसके लिए उन्हें अपनी जो कोएलिशन पार्टनर हैं इमरान खान के, उनको तोड़ना होगा। और उस पे वो काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो जो कोएलिशन पार्टनर हैं इमरान खान के, जो पाकिस्तान की 4 जमातें हैं, मुस्लिम लीग काफ है, उसमें MQM है सिंध से, और बलूचिस्तान से बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, और इसी तरह से अंदरून सिंध से ग्रैंड जो DDA है, डेमोक्रेटिक अलायंस, वो 4 जो पार्टियां हैं उनकी 17 नशिस्तें हैं। तो उनके बगैर फिलहाल मुझे नहीं लगता कि स्पीकर ये अलाउ करेंगे कि इमरान खान का जो मामला है। टेक नोट ऑफ दिस एंड थैंक यू। थैंक यू। बिना विषम प्लीज। Thank you, sir. Sir, if it was a personal debate, I wouldn't have liked to oppose my friends Ashwini Vaishnav. I regard him as a learned man, as a good friend. Everybody is your friend. Maybe more than you. Like me, definitely. But at this moment, I am on my legs to oppose your demands and your railway way of doing things. Policies. Your policies are not for the good of the nation. For the railway. Not for the people's benefits. Sir, everybody knows that the railways are the lifeblood of this country. I remember the famous quote from Karl Marx. 190 years ago, you should know it with us. 190 years ago, 170 years ago, when the railways began in India, Marx wrote about that. He wrote that by starting the railways and the English education in India, the British colonial masters are becoming the unconscious tool in the hands of history. He was right also. The purpose of the Britishers to start the railways was not for the good of India. It was meant for them to bring the timber logs and the cotton harvest to the ports of India to be exported to the Manchester or to other British place of industries. That was the purpose. But that railways changed the face of India. That railways gave a new momentum for the freedom struggle. That railways allowed the people of India to know each other, and that railways kindled a great enthusiasm for the freedom struggle of this country. In that way, we regard the railways as the greatest concern of India. The BJP should remember that. Yes. So that railways, under now in your rule, is facing lot of troublesome days and policies. That policies are really doing a lot of disaster for the real growth of Indian railway system. Sir, the biggest employer of this country is railways. Biggest employer. It employs 30 lakhs of people. But today, it is nurturing unemployment. I expect the minister to tell here the extent of vacancies that exist in the Indian Railways today. I request him to make an assurance to this House that when these vacancies are going to be filled. My friend Ashwini, I am very sure you know what has happened in Patna. It was 1.25 lakhs of people who were trying to get the job as applicants. How much were the vacancies announced?
the proclaimed vacancies were only 35,000. For those vacancies, 1.25 lakhs of young people, they applied. Most of them are well qualified. Engineers and professionals, they applied. And the chaos that happened in the streets of Patna, in parts of UP, it is known to you. And it shows how adamant railways are not to fill those vacancies. This House demands you, considering the gravity of the unemployment situation of the country, please fill the vacancies now. Make a statement here where you will reply that these vacancies can be filled by a different span of time. All contract left. That is what is expected from you. Contract. People are retiring in the railways now. And when people retire, no new recruitments are happening there. Contracts. All are contracts. Yes. Those people who are retired are again coming back as contract employees. No social They are justice. exploited. So railways as a PSU is supposed to uphold the social concerns and obligations. And now under you, the social responsibility of the government, of the railways, are completely forgotten. And you talk about railway growth, and that growth trajectory is not a truth. That's why we oppose it. Yeah. Sir, as we see in every sector of the country, railways are also seeing the wrath of privatization. The railways are also for sale. And your government is very keen for that. We know that you are very, very interested to sell the railways, the tracks, the stations, everything for private sector. You tried for that. Freight corridor. We know, sir, the time is... Yeah, 5 minutes. No, this is injustice. Now your time starts. Yes, sir. He is giving a warning only. He started now. Main. Sir, Come to the silver lake. wait, don't, please. Please don't disturb him. His time is over. 5 minutes over now. Another wonder. Sir, Jayarab and Bhuttas are coming together to oppose me. In this. Yes, to prevent my speech. Sir, I am coming to certain issues which we face. Fast. Be fast. तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मोदी को ही हर फसाद की जड़ बताने वाले इमरान खान अगर अचानक मोदी की तारीफ करने लगे तो खबर यूं ही तो नहीं हो सकती है। सवाल इससे आगे का है, इससे इमरान खान को क्या हासिल होना है, उन्हें मिलेगा क्या? मोदी की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ के पीछे दरअसल इमरान खान का मकसद क्या है? उनकी अपनी पार्टी तहरीक इंसाफ में बगावत होने और सत्ता के लिए नवाज शरीफ और जरदारी की पार्टी के लामबंद हो जाने के बाद इमरान अपना हर दाव आजमा रहे हैं। बागी सांसदों को नेशनल असेंबली से बेदखल कराने से लेकर उन्हें धमकाने, उनके बीवी बच्चों के नाम पर धमकाने तक के हर हथकंडे को आजमा रहे हैं। लेकिन हालात जिस तरह के दिख रहे हैं उनमें इमरान खान का 3.5 साल में ही कुर्सी गंवाना लगभग तय माना जा रहा है। The new pension scheme that you offer for the workers from the next year is anti-worker. तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मोदी को ही हर फसाद की जड़ बताने वाले इमरान खान अगर अचानक मोदी की तारीफ करने लगे तो खबर यूं ही तो नहीं हो सकती है। सवाल इससे आगे का है, इससे इमरान खान को क्या हासिल होना है, उन्हें मिलेगा क्या? मोदी की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ के पीछे दरअसल इमरान खान का मकसद क्या है? उनकी अपनी पार्टी तहरीक इंसाफ में बगावत होने और सत्ता के लिए नवाज शरीफ और जरदारी की पार्टी के लामबंद हो जाने के बाद इमरान अपना हर दाव आजमा रहे हैं। बागी सांसदों को नेशनल असेंबली से बेदखल कराने से लेकर उन्हें धमकाने, उनके बीवी बच्चों के नाम पर धमकाने तक के हर हथकंडे को आजमा रहे हैं। लेकिन हालात जिस तरह के दिख रहे हैं उनमें इमरान खान का 3.5 साल में ही कुर्सी गंवाना लगभग तय माना जा रहा है। और इसीलिए अचानक से उनके मुंह से प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ निकली और इसके मायने इसमें ढूंढे जा रहे हैं। मोदी के खिलाफ बोलकर इमरान खान पाकिस्तान के आवाम के बीच जगह बनाने में लगे रहे। अब मोदी और हिंदुस्तान के जाप से क्या सत्ता बचा सकते हैं इमरान खान? क्योंकि क्यों तारीफ की उन्होंने भारत की विदेश नीति की, यह सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। और आज हम तालीनी सवालों के साथ ठोकेंगे कि फंसे इमरान तो क्या भारत की महानता में अब उन्हें सोल्यूशन दिखाई दे रहा है? मियां नियाजी घबराए तो मोदी राग पर आ गए।
खतरे में गद्दी तो याद आए मोदी। मियां नियाजी का गेम क्या ओवर माना जाए और इमरान नियाजी का क्या तख्ता पलट होने जा रहा है, क्या पॉलिटिकल कू इसे माना जाए। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ पीटीआई से उस्मान बसरा हैं, शहजाद अनवर फारूकी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले उस्मान बसरा जी, मैं आप ही का कमेंट यहां पर लेना चाहती हूं और आपका कमेंट हर लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत में जो आपके प्रधानमंत्री इमरान खान का स्टेटमेंट है काफी सुर्खियां बटोर रहा है कि अब उन्हें याद आया कि भारत की विदेश नीति जो है वो काबिले तारीफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कल प्राइम मिनिस्टर ने जो उसका कौन है, उसका बस नहीं जानने। ये एक टेक्निकल ग्लिच है उस्मान बसरा, हम इसे फिक्स कराना चाहेंगे, उसके पास वापस लौटूंगी। उस्मान बसरा, आपके इस कमेंट के लिए। कई और खास मेहमान शहजाद अनवर फारूक। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मोदी को ही हर फसाद की जड़ बताने वाले इमरान खान अगर अचानक मोदी की तारीफ करने लगे तो खबर यूं ही तो नहीं हो सकती है। सवाल इससे आगे का है, इससे इमरान खान को क्या हासिल होना है, उन्हें मिलेगा क्या। मोदी की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ के पीछे दरअसल इमरान खान का मकसद क्या है। उनकी अपनी पार्टी तहरीक इंसाफ में बगावत होने और सत्ता के लिए नवाज शरीफ और जरदारी की पार्टी के लामबंद हो जाने के बाद इमरान अपना हर दाव आजमा रहे हैं। बागी सांसदों को नेशनल असेंबली से बेदखल कराने